Hello children, today we are going to start poem 2 Palanquin Bearers. Poem 2 Palanquin Bearers. See children, today I will read this poem, I will recite this poem and then after you have to repeat after me. So for this you have to keep your book open with yourself and then put your finger on your book. Then let's start. I will recite this poem, then I will explain you all the new words or word meanings given in your book. Got it? Now let's start. Palanquin bearers. Palanquin bearers. See children, what is the meaning of palanquin? It means, in Hindi you can say palki, okay, in which the bride, or you can say the in the early days queen used to sit in this, okay. पालकी मीन्स व्हाट, एक बॉक्स टाइप का बना होता है जिसमें चार वो निकले होते हैं, रॉड टाइप के निकले होते हैं, लकड़ियों के बने होते हैं ये, ओके। और इससे कुछ लोग क्या करते हैं, कैरी करते हैं। और इसमें मोस्टली क्या होता है कि हाँ मतलब कि दुल्हन बैठती है जैसे ब्राइड, एंड देन जब पुराने ज़माने की बात की जाए तो जो हमारी क्वीन होती थी वो इससे जाती थी, क्योंकि पहले तो हमारे पास गाड़ियाँ नहीं होती थी ना, दैट्स वाई दे यूज़ दिस वन। Bearers means what? The person who are carrying this palanquin. Those persons who are carrying this palanquin are called bearers. जो इस पालकी को जो कैरी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, bearers कहते हैं। Now let's start. Before you read, you must have observed the custom of carrying the bride in a palanquin after the wedding. See children, the word observed, it will be observed, okay, observed. Custom, 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 custom. Carrying, 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 carrying. Bride, not breed, bride, bride, okay. Palanquin, 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 it will be palanquin, not palanquin, palanquin, not this way, okay. Wedding, 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 got it. Through, 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 not throw. If you will pronounce it throw, then it will be throw, throw means फेंकना, but here the word is through, through. Then come to the next paragraph. A palanquin is a covered box type carrier usually meant for one passenger. It is carried by an even number of men called bearers on their shoulders by means of a pole. Now see children, covered, 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 not covered, got it. V को भा नहीं बोलना आपको, you have to pronounce it covered. And then carrier, carrier, carrier. And then passenger, 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 passenger. Bearers, 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 bearers. Shoulders, 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 okay. Pole, pole, pole. Now let's move to the poem. Lightly, oh lightly, we bear her along. lightly, lightly, okay, lightly. Along, along, along. She sways like a flower in the wind of our song. Sways, sways, sways. She sways like a flower in the wind of our song. wind, wind, not wind, got it. It will be wind. She skims
like a bird on the foam of a stream. She skims. S-K-I-M-S, skims. B-I-R-D, bird. Here bird, in the bird you don't have to pronounce it like bird. Ra nahi aani chahiye, got it? It should be bird. It means R will be silent. Foam, F-O-A-M, foam. Stream, S-T-R-E-A-M, stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. Floats, F-L-O-A-T-S, floats. Laugh, L-A-U-G-H, laugh, not log. Okay, don't pronounce it at log. It should be laugh. L-A-U-G-H, laugh means हंसना. L-I-P-S, lips. ड्रीम, D-R-E-A-M, ड्रीम. आप ड्रीम देखते हो ना रात में, दैट इज अ ड्रीम. गेली, ओ गेली, वी ग्लाइड एंड वी सिंग. ग्लाइड, G-L-I-D-E, glide. We bear her along like a pearl on a string. Pearl, P-E-A-R-L, pearl. P-E-A-R-L, pearl. String, S-T-R-I-N-G, string. S-T-R-I-N-G, string. Now let's move to the next page. Softly, oh softly, we bear her along. S-O-F-T-L-Y, softly. Bear, B-E-A-R, bear. She hangs like a star in the dew of her song. Hangs, H-A-N-G-S, hangs. Okay, star, S-T-A-R, star, it is simple. Dew, D-E-W, dew, not deo. एंड और कुछ और में ही बोल सकते हो आप. इट शुड बी ड्यू. ओके. शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड. स्प्रिंग्स, S-P-R-I-N-G-S. इट शुड बी स्प्रिंग्स. बीम, B-E-A-M, बीम. ब्रो, B-R-O-W, ब्रो. गॉट इट. टाइड, ना कि टिड. इट शुड बी tide, T-I-D-E, tide. She falls like a tear from the eyes of a bride. Falls, F-A-L-L-S, falls. Okay. Tear, T-E-A-R, tear. Tear means what? Tear means होता है फाड़ना, किसी पेज को टीयर करना, फाड़ना. और आंसू. ओके. जब हम रोते हैं तो हमारे जो आंखों से वो आंसू जो आते हैं उसे टीयर कहते हैं. ब्राइड, B-R-I-D-E, ब्राइड. ब्राइड मीन्स दुल्हन. लाइटली, ओ लाइटली, वी ग्लाइड एंड वी सिंग. वी बियर हर अलॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग. नाउ दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय सरोजनी नायडू. ओके, सरोजनी नायडू. नाउ सी चिल्ड्रन अबाउट द पोएट. हियर द poet's name is Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was a Bengali poet. Okay, who was also known as the Nightingale of India. Nightingale, N-I-G-H, night, T-I-N, ting, G-A-L-E, gale. Nightingale of India. She has written many children's poems and was an important figure. Important, I-M-P-O-R-T-A-N-T, important figure in India's fight for independence. See children, the word is lengthy. Independence, I-N-N-D-E-D-P-E-N, pen, D-E-N-C-E, dance. Independence, got it? From the British colonial rule. C-O-L-O-N-I-A-L, colonial. British, B-R-I, bri, T-I-S-H, tish. It should be British. Got it? Now once more I am going to read it. Now listen carefully.
Lightly, oh lightly, we bear her along. She sways like a flower in the wind of our song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. Gaily, oh gaily, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. Come to the next page. Softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star in the dew of our song. She springs like a beam on the brow of the tide. She falls like a tear from the eyes of a bride. Lightly, oh lightly, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. Now see children, come to the new words. Bear means carry. The word is given. Bear means carry. Suppose अच्छा आप ये बताओ, आप जब बैग को अपने शोल्डर पे रखते हो तो उसे क्या कहते हो? What you have done here? You have carried your bag. Okay. The word carry. Carry means किसी चीज़ को अपने हाथों में या कंधे कहीं पर भी आप टांगना, जो ढोना कहते हैं, that is a carry. Okay. Then sways means move slowly from side to side. Sways मतलब होता है कि धीरे धीरे इधर से उधर वो मूव करना. जैसे आपने स्विंग्स देखा है, झूला. झूला क्या होता है? वो स्विंग्स देखा है, टू एंड फ्रो मोशन में वो होता है, मूव करता है. दैट इज योर स्वेज. स्किम्स मूव्स क्विकली. स्किम्स मतलब मूव्स क्विकली, मतलब थोड़ी तेज़ी से मूव करना, बढ़ना. ओके. फोम मीन्स बबल्स. बबल्स आपने देखा है, आप तो जानते ही हो. गेली मीन्स चेयरफुली. चेयरफुली मीन्स हैप्पीनेस, विथ द फुल ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुशी खुशी. गॉट इट. ग्लाइड मीन्स मूव्स स्मूथली, मतलब कि बहुत ही आराम से चलना, स्लो स्लो चलना. दैट इज़ योर ग्लाइड. संभल कर चलना, दैट इज़ योर ग्लाइड. स्प्रिंग्स मीन्स जंप्स. जंप्स आप जानते हो, जंप करना, तो मतलब कि जंपिंग जो आप वर्ड यूज़ करते हो ना खेलने के वक्त, दैट इज़ योर स्प्रिंग्स. बीम लाइट, रेज ऑफ लाइट, जो लाइट हमारी होती है उसकी जो रोशनी या किरण कहते हो आप, दैट इज़ योर बीम. ब्रो मीन्स टॉप, द अपर पार्ट. ओके. ब्रो मीन्स टॉप, मीन्स ऊपर वाला हिस्सा, द अपर पार्ट. टाइड मीन्स वेव, लहरें. ओके. Now children, these are the new words which you have to learn by your heart, and that's all for today. Thank you.